की सूरत में अपने आप को देख रहा। Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan. And he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen. And it's an honor to work with someone of his caliber. If you think about Kamran Sultan, he is fantastic, and I highly recommend him for doing the seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan, in NLP, you won't find any better. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. Okay, so go see Kamran Sultan. He's a great guy. He does fantastic programs. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Assalamu alaikum everyone. I hope you can see me and you can hear me. Let me just adjust a few things here. And inshallah ta'ala, we are starting our session now. So welcome to each of both of you to this session. Today's session is about emotional mastery. And it's like hamari emotional lives. I was just thinking about this. कि हमारे माशरे में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं लाइक इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में probably speaking about our emotions, expressing our emotions is kind of a taboo. It's like हम अगर अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अगर किसी किस्म की कोई somebody is going through some kind of emotional problems, तो लोग उसको दबाते हैं, लोग उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और अगर कोई एक्सप्रेस करे तो उसका हल जो है वो यही समझा जाता है कि उसको रिफ्रेस कर दो. इट्स लाइक बजाय इसके कि उसका कोई प्रॉपर हल तलाश किया जाए, बजाय इसके कि ये रिकग्नाइज किया जाए, हाँ ठीक है एक इशू है, किसी भी के साथ भी हो सकता है. ओके, प्रॉबेबली हमारे यहाँ अगर किसी के चेहरे पे एक छोटा सा पिंपल निकल आए उसको ज्यादा टेंशन दी जाती है, अगर अगर उसकी इमोशनली कोई बिल्कुल अंदर से खत्म हो गया हो उसको लोग अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं. सो इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, बट बहरहाल दिस इज आई वाज थिंकिंग कि हमारे यहाँ इन जनरल ऐसा है, और हमारे पास फिर अब जाहिर हम इस चीज को रिकग्नाइज ही नहीं करना पसंद करते, हम उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, तो फिर हम उसके हल तलाश करने की भी कोशिश नहीं करते. और अलबत्ता हमें हमारे जितने भी इश्यूज होते हैं अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ अटैचमेंट होती है हमारी. इफ यू थिंक अबाउट इट कि आपकी वो मेमोरीज जो आपको याद है, यानी आपने अगर स्कूल में पढ़ा है और आपने स्कूल में प्रॉब्ली अगर मैट्रिक तक भी किसी ने पढ़ा हो तो आप लिटरली हजारों दिन स्कूल गए होंगे और हर रोज आपकी 4-5 क्लासेस में भी 6 क्लासेस होती थी. मगर आज अगर आपसे पूछा जाए कि आपको स्कूल की क्या चीजें याद हैं तो आपको वो चंद इवेंट्स याद होंगे जिसमें आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट थी. आपको वो लेक्चर्स जो आपने टीचर से सुने नहीं याद होंगे, लेकिन जब किसी टीचर ने आपको शाबाशी दी थी, आपके कंधे पे थपकी दी थी, कि आपको एक चांटा लगाया था, वो इमोशनली अगर आपके लिए वो इमोशनल एक्सपीरियंस था, यू वुड रिमेंबर दोस थिंग्स. आपने वो वक्त जो इमोशनल अटैचमेंट्स में गुजारे हैं वो आपको याद हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें आपके जहन में नहीं है. क्यों? बिकॉज इमोशंस हमारे they're really important. हमारा जो एक एटीट्यूड बन गया है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं करते, और अगर कोई एक्सप्रेस करे तो हम उसको बुरा समझते हैं. मैंने अपना जो पिछले सेशन किया था प्रॉस्पेरिटी कोचिंग,
उसके अंदर मल्टीप्लाई और इनकम के हवाले से हमने डिस्कस किया था। बाय द वे मेरी यूट्यूब चैनल पे यू विल फाइंड दैट होल प्रोग्राम, इवन दो जब मैंने प्रोग्राम किया था आई सेड कि आई विल नॉट लीव इट, लेकिन इतने सारे लोगों के मेरे पास मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे, सो इट्स अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर यू कैन गो टू प्लेलिस्ट और वहां पर आप जाकर यू कैन, नॉट नाउ ओके, यू कैन डू इट लेटर। मगर उस प्रोग्राम में भी मैंने ब्रीफली इस चीज पे बात की थी कि हमारे इवन पैसे के साथ इमोशंस अटैच होते हैं, कि सक्सेस के साथ इमोशंस अटैच होते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि लोग इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं इमोशनली उन चीजों के साथ कि जब व्हेन दे लूज दोस थिंग्स दे हैव दिस लाइक एज इफ जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, एज इफ देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर देम। ओके, हम जब ये देखते हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे होते हैं खुदकुशी? किसी का दिल चाहता है सुबह उठ के चलो यार नाश्ते खुदकुशी कर लेते हैं आज। यू थिंक दिस इज हाउ दे डू इट? नो, दे आर सफरिंग फ्रॉम इनसाइड, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। एंड इट्स लाइक किसी के चेहरे पे लिखा हुआ आम आदमी नहीं पढ़ पाता, उसको नजर नहीं आता, इवन लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लोगों को नहीं पता चलता है। और जब वो जिनसे एक्सप्रेस करते हैं, एक इशू ये होता है हमारी जिंदगियों में, हम अगर अपने जो इश्यूज हैं हम अगर उन लोगों से एक्सप्रेस करें जो उसको नहीं जानते, जो उसको नहीं समझते, हमको वहां से मदद भी नहीं मिलती है। कि देखो, अगर आपकी गाड़ी खराब होगी तो आप उसको डॉक्टर साहब के पास नहीं लेके जाएंगे, आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप मैकेनिक के पास नहीं जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। दैट्स कॉमन सेंस। लेकिन अगर कोई मैकेनिक के पास जाए, क्योंकि जी मैकेनिक जो है वो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा समझदार आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, वो सारी चीजें उसके अंदर होने के बावजूद वो मैकेनिक जो है इज नॉट क्वालिफाइड। ओके, यू विल बी बेटर ऑफ कि आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो शायद आपको बहुत पसंद ना भी हो, लेकिन स्टिल ही और शी इज क्वालिफाइड टू हेल्प यू विद योर इशू। ओके, हमारे जो इमोशनल इश्यूज होते हैं इसमें हम जो एक और काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, किसी साथी से बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें एक चीज होती है शायद कि इंसान अपने दिल का गुबार निकाल लेता है, और वो जो दिल का गुबार निकल जाता है उसको कम से कम थोड़ी देर के लिए जरूर हल्का फील होता है। एंड जब ऐसा होता है, अगर आपने कभी अपने किसी दोस्त से बात की हो या आपके किसी दोस्त ने आपसे की हो, तो एक सेंटेंस उस पर बोला जाता है कि यार तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया। ओके, या उस वक्त जरूर हुआ, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। यू अंडरस्टैंड? इट्स लाइक कि अगर किसी को कोई तकलीफ थी, कोई बीमारी है और उसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है, तो उसने कोई गोली खा ली, कोई इंजेक्शन ले लिया, और उस गोली ने, उस इंजेक्शन ने उसके जो पेन रिसेप्टर्स थे उन तक जो दर्द के सिग्नल्स जा रहे थे उनको रोक दिया। बीमारी खत्म नहीं हुई है। अब मरीज जो है वो समझ रहा है कि जी मुझे आराम आ गया जी, वो इंजेक्शन लगाना तो आराम आ गया, वो मैंने गोली खा ली तो आराम आ गया। अरे भाई, ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं। ओके, तो चीजों को समझें, चीजों की नौयत को समझें और उन चीजों को उनको जानें, ताकि आप उनके सॉल्यूशंस सही जगह पे सही सॉल्यूशंस तलाश कर सकें। जब तक हम इस तरह से करते रहेंगे, वी डोंट फाइंड सॉल्यूशंस। एंड देन दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, मेरी जो फील्ड है इसका ताल्लुक इस ये कहलाती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो इससे कुछ लोगों के जहनों में ये गलतफहमी होती है कि दिमाग जो है उसको बस एक बार प्रोग्राम कर देंगे कंप्यूटर की तरह, और उसके बाद फिर कोई दोबारा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बाय द वे, इफ यू आर न्यू टू दिस वर्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और एनएलपी, मेरी वेबसाइट पे देयर आर there's a lot of information, और मेरी YouTube channel पे there are number of different videos that you can watch. I think now there are more than 400 videos, actually 421 videos. So there are a number of videos that you can watch, and मेरी website पे कुछ articles भी हैं। And if you're interested in learning NLP, I have from very basic to advanced level courses which you will find on my website. मेरी website जो है that's first-institute.com। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर हैं तो YouTube चैनल पे मेरी जो ऊपर हेडर है उसमें भी आपको लिंक नजर आ जाएगा, और मेरी बहुत सारी वीडियोस में भी आपको नजर आ जाएगा। So if you're interested in learning NLP, you can go and check that. If you want to be able to
use these things for yourself and help other people, if you want to become a coach and do the kind of things that I do, so you will find that. And if you want to know more about me, you don't know who this guy is, you want to know more about me, my other website is kamransultan.com. That's where you will find all the information. I've been doing this for almost 27 years now. I've been like practicing for 27 years. I've been teaching for 27 years. So emotions जो है हमारे, इनके साथ, it's like people don't express them, or they express them to the wrong person, and then they don't get any help. By the way, how many of you here right now can relate to what I am saying, can actually understand or agree to what I'm talking about? Now, does this make sense or does it not make sense? Let me know. In the meantime, I can have some tea. And at the same time, by the way, if you have some friends, some family members, someone you think that who needs help with this, okay, who you think can find it useful to at least learn about their emotions, okay, because हमारा आज का जो session है, this is not the final thing. This is, and this will give you some tools, and through repetition, using them, you will find it will be most useful for you. So, but if you know someone who may be interested, share this link, invite them to this session, because this recording will not be available on my on my YouTube channel, and that's for sure. So I see there are some people responding. Yeah, it's relatable, it makes sense, it's right, fully agreed, make a lot of sense, agreed, 100%, 100% agree. Okay, you know what, since आप लोग YouTube पर देख रहे हैं, and it's like, if you respond, if तो मुझे अंदाजा रहेगा कि आपके लिए क्या चीज useful है, and I can adjust my presentation for you. Okay, I can customize it for you, make it most useful for you, because I don't have any written notes here जिसको मैं follow कर रहा हूँ. I don't have any plan कि I will talk about this and this and this. I come and speak randomly. So, लेकिन आप लोगों के responses से I will be able to help you the best. Okay, so, and this is how coaching works, by the way. Those of you who are coaches or want to become coach, understand this. As a coach, when we are in a coaching conversation, we don't have a written agenda. Okay? It's a kind of a conversation. Somebody walks in and or comes online, and we have a conversation. Okay. एक ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप, हमने जी सब पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये इस पे बात करेंगे. लेकिन जो कोचिंग होती है, इट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, सो I would love to see your responses. So अगर आप respond करेंगे, I will be able to help you best. Okay. So, and here's another thing, like if you are watching it with other friends and family members, and आप लोग आपस में इन चीजों को अगर एक दूसरे के साथ भी discuss करेंगे, it will help you. Okay, some of these conversations that we have, these are like deep conversations. मैं अभी कुछ अर्से पहले एक चीज पे बात कर रहा था, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, और मेरे एक प्रोग्राम में मैंने इस पे बात की थी अपने स्टूडेंट से, एंड दैट इज कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं. हैव यू एवर नोटिस दिस कि हमारे पीपल वी थिंक वी नो, वी एक्चुअली डोंट नो देम. What we know about them is, जिसे हम कहते हैं उनकी प्रेफरेंसेस. उसको खाने में ये अच्छा लगता है, पहनने में ये अच्छा लगता है, खेल उसको फलाना पसंद है, सियासी नजरियात उसका रुझान इसकी तरफ है. That's what we know, and that's what we think कि this is what the person is. वो उस शख्स की प्रेफरेंसेस हैं, वो शख्स नहीं है. और हम एक दूसरे को ना जान, और मैंने जाने कितने ऐसे कपल्स के साथ सेशंस किए हैं जहां पे हस्बैंड और वाइफ 25 साल शादी के हो गए, वाइफ आके अपनी कोई इशू बताती हैं, या और हस्बैंड आते हैं और वो अपनी वाइफ के कहते हैं जी मेरी बेगम के साथ ये बहुत सारे इश्यूज बताते हैं, और मैंने पूछा कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं.
तो वाइफ का जो रिस्पॉन्स है, मैं बात कर रहा हूँ वो जो 25 साल से शादी हो गई है, बेगम का रिस्पॉन्स ये मुझे आज तक नहीं समझे. ओके, एंड आई हर्ड दैट फ्रॉम मेन एज वेल. वाइफ थिंक्स दैट शी नोज हर हस्बैंड, बट ऑल शी नोज इज प्रेफरेंस. इनको खाने में ये पसंद है, पहनने में ये पसंद है. इट्स लाइक दैट्स इट. बट knowing a person from inside is a different thing. And the reason that we don't know each other that way, people don't know each other because they don't talk about those deeper issues. Generally, लोगों की जो conversations होती हैं वो surface level पे होती हैं. ये जो हमारी coaching conversations होती हैं deep issues के ऊपर हो रही होती हैं. Okay, when I work people, I get to know them deeply. Okay? This is why मेरी जो coaching होती है, I call it deep inner coaching. Okay. So I'm reading some of your questions and some of your comments. I may or may not have answer to all the questions. And kabhi-kabhi aisa hota hai ki people come up with their own hallucinations about things, and then they think that they're in the right direction. Agar, because इस तरह के फोरम में जहाँ पे मुझे नहीं पता क्वेश्चन करने वाला कौन है. एक और आपको चीज में बताऊं, ये मैं पहले भी इस पे अपने प्रोग्राम्स में बात की है. एक बहुत हमारे साथ ये चीज हो रही है कि मेरे पास बहुत ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो अपना पूरा का पूरा इशू लिखते हैं, ना अपना नाम लिखते हैं, ना अपने बारे में कुछ बताते हैं. देखिए, हर इंसान जिंदगी की डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट किस्म के इश्यूज एक्सपीरियंस करता है. एक आदमी जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो 20-25 साल की उम्र में है, उसके इश्यूज, और एक आदमी जो से 40-45 साल का है, जो कि शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं, उसके इश्यूज डिफरेंट होंगे. एक आदमी उसी एज का होगा, उसके डिफरेंट होंगे. एक औरत उसी एज की होगी, उसके डिफरेंट होंगे. एक आदमी जो उस एज में शादीशुदा होगा, उसके डिफरेंट होंगे. एक जो गैर शादीशुदा होगा, उसके डिफरेंट होंगे. एक जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहा होगा, उसके डिफरेंट होंगे. एक जो इंडिविजुअल अलग से एक फैमिली के तौर पे रह रहे होंगे, उनके डिफरेंट होंगे. और मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, किसी के लिए भी, कोई भी प्रोफेशनल जस्ट आपका टेक्स्ट मैसेज पढ़ के आपको कोई जवाब दे सके. सो अगर आप वाकई में हेल्प चाहते हैं, सो यू मस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. और ये एक छोटी सी मैनर्स की भी बात होती है. और बेशुमार बार मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए हैं, तकरीबन रोज ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं. मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, एक क्लिप है मेरे पिछले प्रोग्राम की, एंड आई लिटरली शेयर दैट विद पीपल जस्ट टू रिमाइंड देम दैट यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. दैट्स पार्ट ऑफ योर मैनर्स. Anyway, so I also want to overcome stress, eating binge, blah, 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 blah. Okay, grief, sadness. Okay, चलिए, let's begin. हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं. What are emotions? Okay, और ये emotions और ये feelings जो हैं, ये दोनों सेम चीज है, ये अलग अलग चीज है. Okay, so इसकी एक छोटी सी चीज आपको बताऊं. उलमाए हिप्नोसिस के दरमियान, उलमाए NLP के दरमियान इस बात पे इख्तिलाफ है. उलमाए साइकोलॉजी के दरमियान इस बात के ऊपर इख्तिलाफ है कि इमोशंस जो है वो सेम है और फीलिंग से या अलग अलग है. एंड इट डजंट मैटर. इट्स लाइक some people say they are same, some people say they are different. It's like different people have their different opinions. Okay, it's not about right or wrong. It's just that people have difference of opinions in everything. People have differences in opinions. So आज हम जो बात करें, we'll talk about just emotions in general, whatever your understanding of emotions. So we have emotions जो है हमारे, these are interpretations or misinterpretations of events in our lives. Okay, and that is the real source. Okay, those interpretations or misinterpretations. अभी मैं इस पे थोड़ी देर में और डिटेल से बात करता हूँ. Emotions जो होते हैं, इनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं, 2 किस्म के होते हैं. एक होते हैं जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, यानी किसी को गुस्सा आया, उसने गुस्से में आके कोई तोड़ फोड़ शुरू कर दी, या किसी को बहुत खुशी हुई और उसने खुशी में जाके किसी को गले लगा लिया. सो ये फिजिकल एक्सप्रेशन हो गया. ओके, वो एक जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है. और कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जो इंटरनल होते हैं, यानी किसी को गुस्सा आया और उसका चेहरे का रंग जो है वो बदल गया, या किसी को खौफ हुआ और खौफ की वजह से उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आवाज बदल गई. इसके अंदर मजीद कुछ डिस्टिंक्शंस हैं, मैं इस पे भी नहीं जा सकूंगा. खासे लंबे टॉपिक्स हैं, मैं जितने इन पे बात करता हूँ बहुत लंबे टॉपिक्स होते हैं, जहन में पॉइंट्स आते रहते हैं. लेकिन इफ आई स्टार्ट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दैट,
तो फिर हमारा टाइम जो है वो खासा निकल जाएगा। लेकिन बट इमोशंस के एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड देन वी हैव दोज इंटरनल। जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस होते हैं उससे तो हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है किसी के साथ, ओके, टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो इंटरनल हो रहा होता है हमें उसका अंदाजा भी नहीं हो पाता, हमें उसका इतराक भी नहीं हो पाता अक्सर। उसकी कई वजूहत हैं, मैं उसकी वजूहत में भी नहीं जाता, सो दैट विल सेव आवर टाइम। लेकिन ये इमोशंस जो है हमारे ये जनरेट कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनका सोर्स क्या चीज बन रही है। तो देखो, और बहुत ब्रीफली अगर मैं एक मॉडल आपके साथ शेयर करूं तो क्या है कि हमारे साथ जिंदगी में मुख्तलिफ हालात होते हैं, ओके। मसलन जनरल मुल्क में जो भी कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, दुनिया में जो भी हो रहा है, मैं पाकिस्तान की खबरें बहुत ज्यादा नहीं रखता सिवाय इसके व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास जो आती रहती हैं। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, या इंडिया में, या इट्स लाइक चीन में या जापान में या अमेरिका के अंदर, जहां पर भी दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, इट्स लाइक, या मिडल ईस्ट में, इट्स लाइक दुबई के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी हालात चल रहे हैं, जो भी वाकयात हो रहे हैं, जहां पर भी हो रहे हैं, okay? ये वो चीजें जो हमारे बाहर हो रही हैं, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रही हैं। और वही इसी तरह वो चीजें जो आपके घर में हो रही हैं, आपकी जॉब में हो रही हैं, आपके करियर में हो रहे हैं, आपके साथ मुख्तलिफ लोगों के रवैया आप देखते हैं, आपके फैमिली में मुख्तलिफ चीजें होती हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मगर अब ये जितनी भी चीजें हमारे बाहर हो रही हैं, यानी कोई शख्स हमारे साथ किसी अंदाज से बात करता है, कोई शख्स हमें किसी अंदाज से ट्रीट करता है, या हमारी हमारे साथ कोई कोई वाकयात होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी के यहाँ कोई फौतगी हो जाए, इट्स लाइक जो भी कुछ हो रहा है। बट हमारे एक्सटर्नल इवेंट्स ये वो चीजें हैं जिन पे हमें डायरेक्टली कोई इख्तियार नहीं है, जिस पे हमें कोई कंट्रोल नहीं है, ओके। हम अभी बैठे हुए हैं और अगर फर्ज की जाए अचानक से खुदा ना खास्ता जल्जला आ जाए, हमारा इख्तियार नहीं है उस पर। अगर कहीं सैलाब आ जाए, हमारा इख्तियार नहीं है। अचानक बारिश हो जाए, हमारा इख्तियार उस पर नहीं है। या अगर हम अक्सर सुनते हैं, जी बिल्कुल ठीक थे, अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक कोई चीज हो गई। तो ये तमाम चीजें जो अचानक हो रही हैं, हमें इस पे कोई इख्तियार नहीं है, हम इख्तियारी तौर पे नहीं कर रहे हैं, ओके। इवन अगर फर्ज करो किसी के साथ कोई किसी किस्म की कोई कोई वारदात हो जाती है, कोई सिचुएशन हो जाती है, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ अस एंड विदाउट आवर डायरेक्ट कंट्रोल, those are the things that we call events in our lives, okay, situations or circumstances. So जब हमारे साथ मुख्तलिफ situations होती हैं जिंदगी में, मुख्तलिफ circumstances होते हैं हमारी जिंदगी के, हम उन circumstances के बारे में सोचते हैं, okay? हम अगर उनके बारे में जब सोचते हैं तो हम उसके बारे में अपनी एक राय कायम करते हैं, ओपिनियन फॉर्म करते हैं। अगर वो ओपिनियन हमारा हम पॉजिटिव फॉर्म करते हैं तो हम उसके बारे में पॉजिटिव फील करते हैं। अगर हम उसका ओपिनियन नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो हम उसके बारे में नेगेटिव फील करते हैं, ओके। सो जो हमारा ओपिनियन है वो हमारी इंटरप्रिटेशन है उस इवेंट की जो हुआ। आपने सुना होगा, बहुत से लोग जब उनके साथ कोई कोई खराब चीज होती है, कोई नुकसान की चीज हो जाती है, तो वो उस पर अल्लाह का शुक्र करते हैं, ओके। और हमें तो सिखाया ही, हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, ओके। हम उसके अंदर दुआएं करते हैं अगर हम उस इस चीज का हमें ख्याल हो। और कुछ लोग होते हैं कि वो उस पे शिकायतें शुरू कर देते हैं, बिकॉज उसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। यानी अगर किसी का कोई कोई नुकसान होता है तो इंसान कहते हैं अल्लाह ताला ने पता नहीं किस बड़ी मुसीबत से बचा लिया, अल्लाह ताला ने जान बख्श दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स लाइक, अगर जी मेरी नई गाड़ी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है जी मैं बच गया, अल्लाह का शुक्र है जी मेरी फैमिली बच गई, अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सो हम उस पर शुक्र कर रहे होते हैं, दैट्स लाइक वी आर इंटरप्रेटिंग इट। मैं इसीलिए एक बात कहता हूँ कि हमारा जो दीन है वो हमें एक फ्रेम देता है और एक लेंस प्रोवाइड करता है जिसकी अल्लाह को जरूरत नहीं है, मुझे और आपको जरूरत है।
और जब हम उसके दिए हुए लेंस के जरिए देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें जिंदगी की बहुत बेहतर तरीके से नजर आती हैं, और एटलीस्ट इस तरह नजर आती हैं कि वो हमारे ऊपर मनफी असरात नहीं करती हैं। सो जब हम किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, और वो इंटरप्रिटेशन कहाँ हो रही है, इंटरप्रिटेशन बाहर नहीं हो रही है, इवेंट बाहर हो रहा है, मगर उसकी जो इंटरप्रिटेशन है रही है वो मेरे और आपके जहन में हो रही है, मेरी और आपकी सोच में हो रही है। और फिर उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में हमारे अंदर कुछ एहसासात, कुछ इमोशंस, अच्छी या बुरी फीलिंग्स या इमोशंस आते हैं। और हमारे ये जो इमोशंस होते हैं, फिर वो हमें, बिकॉज वो इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, हमारी बॉडी में हमें कहीं ना कहीं फील हो रहे होते हैं, ये जी मुझे मेरे सीने पे एक बोझ है, जी मेरे कंधों पे बोझ है। मैं जब लोगों के साथ हिप्नोसिस के सेशंस करता हूँ, countless times I've heard this, when people do relax, they say it's like I felt pain in my shoulders. Okay, that's because जब आप relax होते हैं और आप you get into that hypnotic trance, उस ट्रांस की स्टेट में आपकी जो रिलैक्स कैफियत में आपकी जो बॉडी जिन जिन पॉइंट्स पे स्ट्रेस होती है, वो चीज आपको ज्यादा फील होने लगती है। यू बिकम मोर सेंसिटिव टू दैट फॉर फ्यू मिनट्स। सो वो जो चीज है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन आपके और मेरे जहन में हो रही है। Okay, does this make sense? यहाँ तक जो मैं बात कर रहा हूँ, can you understand this? Okay, let me know. Let me see if you have any comments here so far. So I see a comment here from Zabe, and she says, I'm an English lecturer, 55 years old, having some major health issues. Recently lost my husband in Rajon, and trying to overcome the grief at the moment. I have problem that my mind restricts my abilities. Okay. So, it's like when somebody says anything like this, my question to them is, what can I do for you? What would be most useful for you? Okay. And since you are online and you're typing on text, I am sorry, I may not be able to do much. Lekin if you really need my help, you can contact me. You have my WhatsApp number, I hope, or otherwise I'll share that towards the end of the program, and then you can contact me. And Rabia says, Assalamu alaikum, how we get emotional balance. I become oversensitive. How do you'll learn this inshallah today. And मैंने last session किया था ये जो sensitivity वाली चीजें, अगर आपने वो Rabia last session attend किया था, which was on mind mastery, उसमें मैंने ये चीजें कुछ teach की थी about dissociation. It's like हमारी ये जो हम सेंसिटिव ज्यादा हो रहे होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? हम मेंटली इंटरनली जो हम कर रहे होते हैं, हम चीजों के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। एसोसिएशंस हमारी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, डिसोसिएशंस हमारी फीलिंग्स को खत्म करती हैं। तो अगर आप किसी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं अपने माइंड में किसी एक्सपीरियंसेस के साथ, तो फिर यू फील दोज थिंग्स मोर स्ट्रांगली। ओके, so how to deal with interview pressure and job interview? Relax. Okay. And so how to stop overthinking? It's like we'll talk about this. Okay. अभी मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अभी तक जहां तक हमने बात की, does this make sense? Can you relate to this? Can you think of some of the emotions? And मैंने आज अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें मैंने एक मैसेज किया था, and I simply asked you to pick one single emotion, and keeping that one single emotion, whatever that may be for you. Okay. And I pick one negative emotion. So that negative emotion could be anger, it could be sadness, it could be grief, it could be shyness. Okay. Any emotion that you want to just pick one. Okay. As we do this, if you're watching this in recording, every time you watch, I suggest pick one single emotion. Okay. So pick any emotion you want to work on. And since इतने सारे लोग जब कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम आप क्या emotion है आपका, I'll call that a negative emotion.
ठीक है, so it's a negative emotion that you may be experiencing. That negative emotion could be sadness, could be grief, could be anger, could be shyness, could be fear of some kind, could be interview anxiety, or anything else. Okay, whatever label you give it, it's up to you. I'll call that a negative emotion. ठीक है, मनफी जज्बात जो हमारे अंदर होते हैं. Okay, let's keep that. So अब जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ सिचुएशंस हुई, एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस, कि आपकी जिंदगी में ये स्पेसिफिक नेगेटिव इमोशन जिस पे आज आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं आपकी जिंदगी में जिनसे आप उस चीज को रिलेट करते हैं, जिनसे आप कहते हैं लाइक ये फलानी चीज हुई थी, उसके बाद ये चीज हुई, या फलानी चीज अगर होती है तो सो फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, एंड इसे ही जब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना हो, then I feel anxiousness. Okay, so there is this external event happening outside of me, and by thinking about that event, I'm experiencing whatever emotion you guys. Someone also, actually, sometimes people send me messages about their thinking, and then they ask me to tell them, what is their emotion, and that also from a text message, and my answer to them is I don't know. Okay, so Fire Gamer says, just like क्या नाम रखते हैं यार आप लोग भी. I don't get job in government, was in top 5, and unfortunately it expired due to some reason. I can't apply again due to age of depression. Okay, now think about this. Okay, so this is an event outside that you lost a job. This is an external event, and that external event you're interpreting in a way and thinking about it in a way, वो thoughts जो हैं आपके अंदर, ये feeling जिसे you're calling depression, create करेंगे. Okay, और हमारे साथ होता क्या है कि जब हमारे साथ हम ये interpretations करते हैं, हम एक काम और करते हैं, और वो काम हम ये करते हैं कि हम वो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम उनको अपनी शनाख्त बनाकर उसके बारे में सोचते हैं या उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, इस पे भी थोड़ी देर में आता हूँ. सो मैं थोड़ा सा ये जो मैंने बेसिक मॉडल आपके सामने प्रेजेंट किया था, उसको थोड़ा सा मजीद एक्सपैंड कर रहा हूँ. सो बेसिक मॉडल मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए, इवेंट्स हुए, उनके बारे में हमने ओपिनियंस फॉर्म किए, उन ओपिनियंस के नतीजे में हमारे अंदर अच्छी या बुरी फीलिंग्स आई. तो ये 3 स्टेप प्रोसेस हुआ. अब ये जो अच्छी या बुरी फीलिंग्स आई, अब हम इनके बारे में अगले स्टेप में हम लोगों से किसी से बात करते हैं, हम किसी को बताते हैं. आपने कभी एक बात गौर किया, अगर किसी के सर में दर्द हो, अगर फर्ज करें खुदा न खास्ता आपके सर में दर्द है, तो आप कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है. अगर किसी के पेट में दर्द हो तो वो कहेगा मेरे पेट में दर्द है. अगर किसी को कोई और दर्द हो तो वो कहेगा कि जिसमें मेरी फलानी जगह पे दर्द है. लेकिन अगर उसको डिप्रेशन हो तो वो कहता है मैं डिप्रेस हूं. अगर उसको टेंशन हो तो कहता है मैं मुझे टेंशन है. अगर वो उसको डर हो तो कहता है मैं खौफजदा हूं. लोग जब दर्द की बात करते हैं, ये नहीं कहते लोग मैं सर का दर्द हूं, लोग कहते हैं मेरे सर में दर्द है. लेकिन अगर लोग अपनी इंटरनल इन फीलिंग्स इमोशंस की बात करते हैं तो उसको ऐसे बात करते हैं एज इफ दिस इज समथिंग जो कि उनकी बीइंग का हिस्सा है. बाय द वे, प्रोस्पेरिटी कोचिंग का जो 3rd सेशन है, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, गो चेक दैट, so you will get a better understanding on this. मैंने उसमें मुख्तलिफ लेवल्स की बात की थी कि हमारा जो जहन है मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रहा होता है, और उसमें जो डीपेस्ट लेवल्स हैं उनमें एक लेवल जो है दैट्स लाइक बीइंग. और हम जब अपने इमोशंस की बात करते हैं, हम उसको उस बीइंग लेवल के ऊपर ले जाते हैं. और मैंने उस प्रोग्राम में ये चीज एक्सप्लेन की है, इसलिए मैं यहाँ नहीं जाऊंगा कि वो चीज जो हमने उस लेवल पे, जो डीप लेवल पे की होती है, वो हमारे लोअर लेवल्स के ऊपर असरअंदाज होती है. वो हमारी बाकी जहन के दूसरे तमाम प्रोग्राम्स पे, तमाम चीजों के ऊपर असरअंदाज होती है. तो
हमें डिप्रेशन होता है, हम डिप्रेस नहीं है। हमें ग्रीफ होती है, हम ग्रीफ नहीं है। हमें सैडनेस होती है, हम सैड नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस अ डिफरेंस? ओके, सो हम खुश होते हैं, हम खुशी नहीं है। ओके, हमें एहसास होता है, हम वो एहसास नहीं है। किसी की एक कोटेशन, आई डोंट नो किसने कहा था, बट इट्स अ नाइस थिंग। Somebody said, you are not the thought you are thinking, you are the one doing the thinking. And think about this. Okay, तुम अपनी सोच नहीं हो, बल्कि तुम वो हो जो उस सोच को सोच रहा है। सो हम जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी चीज एक्सपीरियंस हो रही है हमें, चाहे वो खुशी हो या गम, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, द सोर्स ऑफ दैट is our thoughts. The source of all feelings, all emotions is thoughts. Our thinking. हम अपनी सोच को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमारे जहन में, हमारी थॉट्स में जो चीज चल रही है, हमारे ख्यालात जो हमारे चल रहे हैं, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। We are not our thinking. We are the ones doing the thinking. So, ये इवेंट हुआ हमारी जिंदगी में। इस इवेंट की हमने कुछ इंटरप्रिटेशंस की। इन इंटरप्रिटेशंस के नतीजे में हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आई, और इन फीलिंग्स को फिर हमने बयान करते हुए, हमने इनके बारे में जब बात करी किसी से, तो हमने जिस अंदाज से बात करी, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमारी उस सिचुएशन के बारे में हमारी स्टोरी है। ओके, ये हमारा तर्ज बयान है इस सिचुएशन के बारे में। और जिस तरह से हम इसको बयान कर रहे हैं, जिन अल्फाज के साथ हम बयान कर रहे हैं, वो चीज हमारी इस थॉट्स को, इन फीलिंग्स को मजीद तकवीत देगा या कमजोर करेगा। ओके, जो मैं बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन करता हूँ एनएलपी की, प्रोग्रामिंग माइंड थ्रू लैंग्वेज। हम अपनी लैंग्वेज के जरिए हर वक्त अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो। तो इन अ सेंस यू आर ऑलरेडी अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एनएलपी, इट्स जस्ट यू डोंट थिंक अबाउट इट दैट वे। Okay, every time when you talk about an event in your life, whether you are doing that talking in your own head or you're expressing it to someone, that whatever you're saying is your story about it. और जितनी ज्यादा आप उस स्टोरी में जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज आपकी उस इमोशंस, उस फीलिंग्स को मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं या वीक करते हैं। ओके, सो एक बहुत बेसिक सीख आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी है, जो आप स्पेशली अगर आप टीवी की खबरें वगैरह फॉलो करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक जुमला देता हूँ, एक छोटा सा जुमला है, महंगाई बढ़ गई। आप गौर करें, इफ यू लिसन टू दिस स्टेटमेंट, महंगाई बढ़ गई, डज इट हैव एनी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन यू? अब आप गौर करें, मैं इसी बात को मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कहता हूं, और गौर कीजिएगा उसके इफेक्ट आपको कैसा फील होता है। महंगाई का बहरान शदीद से शदीद तर। व्हाट इज द डिफरेंस? अब मैं ये स्टोरी है, महंगाई बढ़ गई, ये एक इवेंट हुआ, मगर मैंने इसको एज इट इज अगर बोला, it is still a negative thing for a lot of people, but it doesn't have that strong impact. अब मगर इसको महंगाई बढ़ गई, मैंने कहा महंगाई का बहरान शदीद से शदीद तर, और अगर मैं उसके साथ लहजा भी वैसा ले आऊं जो आप खबरों में सुनते हैं, और जो आप चैनल पे आने वाले लोग अपने सेंसेशनल बना के उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। Okay? अब मैं इसको मजीद इसमें तकवीत लाने के लिए, ऐसे महंगाई का बहरान शदीद से शदीद तर, गरीब आदमी महंगाई की चक्की के नीचे पिसता चला जा रहा है। okay? अब आप गौर करें, यही बात महंगाई बढ़ गई जब आप इस अंदाज से सुनते हैं या कहते हैं, तो यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद दैट। okay? You will be activating different parts of your brain, different programs in your mind, different images in yourself, and as a result आपकी जो feelings होंगी will be different.
Go check that. So Zulkarnain says high intensity. It is like, okay. So it becomes more intense because हमने उसको बताते हुए हमने उसको डिफरेंट कर दिया. So I want you to think about this. I want you to pay attention कि वो इमोशन, वो फीलिंग और उससे रिलेटेड जो भी इवेंट आपकी जिंदगी में है, जब आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, चाहे आप किसी बाहर में किसी दूसरे को बता रहे हो उसकी स्टोरी, या आप अपने आप से जो आपका इंटरनल डायलॉग उसके बारे में चल रहा है, हाउ डू यू टॉक अबाउट इट? What do you say to yourself? What are you telling yourself? Okay. मिसाल के तौर पे somebody says कि जी एक इवेंट क्या हुआ जी, जॉब खत्म हो गई. ओके. Another person, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. ओके. मैं तबाह हो गया. ओके. किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस नहीं चला, बिजनेस में पैसे डूब गए. ओके. नुकसान हो गया. बट वो शख्स तो कहता है मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया. और मुझे नजर आ रहा है मगर सब कुछ खत्म हो गया. मैं सुन सकता हूं मगर सब कुछ खत्म हो गया. मैं बोल सकता हूं मगर सब कुछ खत्म हो गया. मैं चल सकता हूं मगर सब कुछ खत्म हो गया. मेरे पास खाना है मगर मैं सब कुछ खत्म हो गया. It's like, excuse me. Okay. So sometimes when people say these kind of things, I say, listen, please don't exaggerate. Okay, सब कुछ खत्म हो. You're talking. You're still alive. You're still on the surface of this earth. Okay. But the way people relate to this, the way we humans do that, okay, we are all drama kings and queens. Okay, we are all legends in our own minds in that sense. It's like we play those movies inside our heads and then explain them in a way that makes it more exciting. खाली हम ये बोले यार जॉब खत्म हो गई, मजा नहीं आया ना. अब हम इसको स्टोरी जो है हम इसको बढ़ाएं और हम इसको बोलते हैं यार जॉब खत्म हो गई, अब तो जॉब ही नहीं है मेरे पास, अब तो मेरी तो सारी जिंदगी, अब तो मैं हाथ कट गए मेरे, तो पैर कट गए थी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता. और नहीं, कोई नहीं कटे हाथ, कोई नहीं कटे पैर. ओके, दिस इज द वे यू आर इंटरप्रेटिंग इट. एंड योर इमोशंस, योर फीलिंग्स. और हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो है वो रियल है, तो हम ये समझ रहे हैं हमारी इंटरप्रिटेशन जो है ये भी रियल है. ओके. मैं इसकी एक और मिसाल इस तरह से देता हूं कि अगर फर्स्ट करो कि हम एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में कोई एक्साइटिंग सीन है, कोई हम ड्रामा देख रहे हैं, कोई तारीखी ड्रामा देख रहे हैं, उस तारीखी ड्रामे के अंदर कोई सीन है और उस सीन को देख के हम जज्बाती हो रहे हैं, तो जो हमारे जज्बात हैं वो 100% रियल है, इसमें कोई शक नहीं है. हाउएवर, वो जो जज्बात हमारे आ रहे हैं वो एक फिल्म को, एक मूवी को, एक ड्रामे को देखकर आ रहे हैं, और जो हम ड्रामा देख रहे हैं उसमें कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस है, कोई रोल प्ले कर रहा है. वो रियल लोग नहीं है, वो तारीखी लोग नहीं है, वो अर्थरल नहीं है, ओके, वो माई हलीमा नहीं है. दीज आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो ये ड्रामे के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं. और जो हमारी फीलिंग्स आ रही हैं, ये फीलिंग्स, दो के ये फीलिंग्स जो हमारे अंदर हैं, they are 100% genuine, they are 100% real, but those that we are seeing on the screen, they are only actors and actresses. Okay, in exactly the same way, मेरे जहन में, आपके जहन में एक फिल्म चल रही है इस सिचुएशन की जो मेरी और आपकी जिंदगी में हो रही है या हो चुकी है, कभी भी हुई थी, और इस सिचुएशन की जो फिल्म चल रही है इसके नतीजे में जो फीलिंग्स आ रही हैं, बिकॉज मेरी फीलिंग्स रियल है, मैं ये समझ रहा हूं कि इसकी जो जो जिन थॉट्स के जरिए ये फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, ये थॉट्स भी रियल है. एंड दैट्स अ मिस्टेक दैट वी मेक. दैट्स अ मिस्टेक दैट वी मेक. And as long as we keep repeating that mistake, हम NLP में एक चीज कहते हैं, if you keep doing the things that you have always done, you will keep getting what you've always got. अगर तुम वही कुछ करते रहोगे जो कि तुमने हमेशा किया है, तुम्हें वही नतीजे मिलते रहेंगे जो हमेशा मिले हैं.
सो अगर तुमने हमेशा अपने जहन में चलने वाली फिल्म, अपने जहन में चलने वाली थॉट्स को रियल समझा है, क्योंकि वो किसी रियल इवेंट पे बेस करती हैं, इवन तो वो इवेंट 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50, इवन पिछले हफ्ते भी अगर हुआ था, कल भी हुआ था, वो इवेंट कंप्लीट हो चुका है, वो इवेंट हो गया है, खत्म। अब अगर उसके बारे में कोई भी चीज है, तो वो थॉट्स हैं जो तुम्हारे मेरे जहन में चल रहे हैं। सो इवन दो ये थॉट्स जो है किसी रियल इवेंट पे बेस करती हैं, जैसे वो फिल्म, वो ड्रामा अर्थरल, ओके, किसी रियल इवेंट पे बेस करता है, बट जो मैं और आप देख रहे हैं, जिससे हम जज्बात फील कर रहे हैं, वो फीलिंग्स हमारे अंदर उस ड्रामे को देखकर आ रही है। ओके, सो हमारे जहन में एक ड्रामा चल रहा है, एक फिल्म चल रही है, और हम उस फिल्म को बार बार दोहराते हैं, और हम खूब देखते हैं और बार बार देखते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया था एक बार, हमने उसको अपने जहन में दोहराया है 100 बार, और 100 बार दोहराने के बाद हमने उसको इतना मास्टर कर लिया है, इतना प्रैक्टिस कर लिया, नाउ वी थिंक ओह दिस इज हाउ, दिस इज द रीजन। एंड देन फिर क्या हो रहा है, हम उसने जिसने एक बार किया था वो शायद करके भूल भी गया, उसको याद भी ना हो, लेकिन हमने उसको दोहरा दोहरा के दोहरा दोहरा के दोहरा दोहरा के अपने ऊपर एक मुसीबत ली है। इसको कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ती है, तुम्हारे अपने हाथों का आगे भेजा है, जो तुमने आगे अल्लाह ताला ये नहीं कहता तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत पड़ती है तुम्हारे साथ, जो दूसरों ने बुरा भला किया था ना, ये उसका नतीजा है। तुम्हारे साथ जो मुसीबत पड़ती है, जो लाइक जो तुम्हारे माजी में हुआ था, ये उसका नतीजा है। ये तुमने खुद किया था, जो कुछ तुमने किया, ये तुम्हारा अपना हुआ है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अदर पीपल। सो थिंक अबाउट दिस कि whatever event that happened in your life, okay, even though event was a negative event, even though event was an unpleasant event for you, how are you relating? And here's a simple question: how can you relate to this event? What kind of language can you use when talking about this event so you feel better? So just to give you an idea, अगर first करो, you want to explain this event to a 7-year-old child, and you don't want them to have any negative feelings about it, but you just want to teach them a lesson. You have a आपका अपना कोई बच्चा है, बहन का बच्चा है, भाई का बच्चा है, अगर आपका अपना नहीं है, but someone you love, and you don't want them to get hurt or to have negative emotions, but you just want to help them learn some lessons from this experience, ताकि उनकी जिंदगी में उनको प्रॉब्लम नहीं आए. Okay, so what kind of language will you use with that child? I want you to spend some time, think about this. Take your time, think about this. So I'm seeing some comments. Faiza says, please elaborate interpretation. Faiza, I think अगर आप शुरू से हैं सेशन के अंदर, because I did explain, I think. और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप you have missed that. I'm sorry, मैं उसके अंदर वापस नहीं जा सकता. But I did explain that. Yes, Tuba is saying our session is incomplete without Artural. Obviously, Tuba is like Artural के बगैर जिंदगी कैसे गुजर सकती है? आप सोचें ना, आपने अगर पूरे 5 सीजन नहीं देखे तो आपकी बख्शिश कैसे होगी? तुबा जाए पहले आप इस्तगफार करें अगर आपने अभी तक नहीं देखे. So it's like Tuba has heard this Artural thing from me many times. I use that because it's like in Pakistan mein this was something most popular a couple of years ago. So just notice what kind of language will you use, and I want you to explain to yourself, okay, that in that language, and notice if you feel any difference.
इफ यू फील एनी डिफरेंस। आप देखो एक ही चीज है, एक ही बात है। अगर फर्स्ट, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, किसी की जॉब खत्म हो गई, इवेंट इज जॉब खत्म हो गई, फर्स्ट करो किसी का लैपटॉप छिन गया, टूट गया, खराब हो गया, मोबाइल छिन गया, तो इवेंट क्या हुआ, मोबाइल छिन गया। और यू नो उसको अगर हम कहें मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई, आप आपका मोबाइल छीना है भाई, मैं बर्बाद नहीं हुए। मोबाइल में आप, लैपटॉप में आपका सारा डेटा था, आई अंडरस्टैंड यू हैव लॉस्ट योर डेटा, बट आप बर्बाद नहीं हुए हैं, यू हैव जस्ट लॉस्ट योर डेटा। ओके, सो किसी भी चीज को हम मुख्तलिफ अंदाज में बयान करके, आप अपने इमोशंस को मास्टर करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप ये चाहेंगे कोई आपके दिमाग को यूं रीप्रोग्राम करना शुरू कर दे। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन प्रोग्रामिंग। I don't want people to depend on me. I want people to be independent on themselves, that they can understand how things work, what they're doing inside their head, and how they can change it if they want to. If you keep on dependent कि जी कामरान सुल्तान साहब मेरे दिमाग प्रोग्राम कर देंगे और कोई दूसरे साहब आपके दिमाग को प्रोग्राम कर देंगे, I have a bad news for you. It doesn't work that way. और अगर आपको कोई ये बोले कि वो आपके दिमाग को प्रोग्राम कर देगा, वो आपको धोखा दे रहा है। स्टे अवे फ्रॉम दोस पीपल। ओके, स्पेशली जब हम लोग परेशान होते हैं, हम किसी टेंशन्स के अंदर होते हैं, तो हम उन टेंशन्स में जाते हैं, और इस किस्म के जो लोग अगर हमें मिल जाएं, मैंने बहुत देखे हैं, आई एम टेलिंग यू, मैंने अपनी जिंदगी लगाई है इस फील्ड के अंदर। आई हैव सीन पीपल लूजिंग फॉर्च्यून्स in trying in desperation to find solutions. जब इंसान डेस्परेट होता है और डेस्परेशन के अंदर वो लोगों को कि कहीं भी कुछ भी उसको तलाश करे, तो कोई भी बोलता है जी वो फलाने, आप नहीं देखते हैं जो हम आए दिन देखते रहते हैं, बाबा जी औरतों के रेप करते हैं और क्या कुछ करते हैं, जाली पीर और जाली आमिल बन के बैठे होते हैं। लोग क्यों जा रहे होते हैं उनके पास? आउट ऑफ देयर डेस्परेशन, because they have never learned what they can do, what's possible for them, and they live with this idea कि उनके जो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर से आ रहा है, इसका सोल्यूशन भी कहीं बाहर होगा। Okay, and unfortunately it doesn't help, it doesn't work. I hope you get the sense on this. So let's move on. I'll come back to your comments, and let's do some more things on this. So I want you to try something. Okay, I want you to imagine for a moment कि आपके सामने जहां पे भी आप बैठे हैं इस वक्त, इस कमरे में, आपके इस कमरे में इट्स लाइक आपके राइट साइड पे कॉर्नर में एक कैमरा लगा हुआ है। ओके, जैसे आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, अगर जहां भी आप इस वक्त देख रहे हैं, तो देयर इज अ स्मॉल कैमरा, बट एक कैमरा जो है ना, वो सामने ऊपर इधर आपके राइट साइड पे आपके कॉर्नर पे लगा हुआ है। और इस और एक दूसरे कमरे में एक सीसीटीवी रखा हुआ है, और इस कैमरे से आपका जो इस वक्त का इमेज है, चाहे आप लाइव यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं या चाहे आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपका जो इस वक्त का इमेज है, वो इमेज उस स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट इमेजिन दैट कि उस स्क्रीन पर इस वक्त आपका इमेज कैसा जा रहा होगा। एंड नाउ इमेजिन कि कैमरा जो है वो आपके राइट के बजाय आपके लेफ्ट साइड पर है। ओके, और लेफ्ट साइड से कैमरा जो है वो आपको कैप्चर कर रहा है, और आपका इमेज जो है दूसरे कमरे में रखी हुई स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। Is that a different angle, different image? अच्छा, फर्स्ट करें कि कैमरा जो आपका ये जो सामने ही कैमरा है, इस कैमरे से जो इमेज है, वो इमेज उस स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। ओके, कैमरा राइट लेफ्ट नहीं, राइट इन फ्रंट है। इमेजिन, कैन यू डू दैट? लाइक उसको स्क्रीन के ऊपर कैसे इमेज आ रहा होगा? एंड
सोचो अगर ये कैमरा जो है बजाय सामने के आपके पीछे है और पीछे से जो इमेज इस स्क्रीन के ऊपर जा रहा है. Is that different? Do you think it will be a different image? You don't have to see anything in your mind's eye. It's like, but can you imagine like CCTV के ऊपर किस तरह का image आ रहा होगा? So now imagine कि कैमरा जो है आपके कमरे की वो पीछे बिल्कुल farthest corner के अंदर है और वहां से आप जहां पर भी इस वक्त बैठे हुए हैं कि आपका इमेज जो है उस स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. इमेजिनेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं ना. जब हम इमेजिनेशन में पूरा अर्थरल देख सकते हैं, जब हम इमेजिनेशन में अपनी पूरी पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल कर सकते हैं, वी कैन इमेजिन एवरीथिंग. समटाइम्स मुझसे इमेजिनेशन नहीं होती यार. अगर इमेजिनेशन नहीं हो रही होती तो भाई यार तुम परेशान कैसे होते हैं? द रीजन तुम परेशान हो इज बिकॉज यू आर इमेजिनिंग रॉन्ग थिंग्स. दैट्स इट. ओके. नाउ it's like this कि अगर so I'm seeing that people saying 4 different images. Of course, 4 different angles, 4 different images. After this is how it's supposed to be. Okay? Because different angles, you are getting different images. Okay. Cool. Fantastic. Okay. And so what I was saying is that we, people sometimes I don't, मेरी imagination अच्छी नहीं है. अगर imagination अच्छी नहीं है तो फिर then you shouldn't have these feelings. The reason you're feeling because you're imagining those negative things. It's like, so people are watching on their mental screen in their internal channels. They are watching horrible programs and feeling horrible and then telling the world that I'm watching some horrible programs and feeling horrible rather than changing the channel. Okay. And then they think that it's like, I can't miss koi mera channel change kar de. कोई मेरे दिमाग को रिप्रोग्राम कर दे, मेरा चैनल चेंज हो जाए, उसके बाद चीजें मेरी ठीक हो जाए. Unfortunately, it doesn't work that way. Okay? So I want you to, with respect to this emotion जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, I want you to consider, the recall the most recent times when you experience that, whether it's sadness or fear or depression or anxiety, whatever that may be, whatever label you give it, whatever that negative emotion is. I want you to recall the most recent time when you experienced it. This could be आज सुबह हुआ था, it could be last week हुआ था, 1 महीना पहले हुआ था, 15 दिन पहले हुआ था, it's like 3 महीने पहले हुआ था. Doesn't matter. Just the most recent that you can remember. The most recent. Then I want you to imagine कि आपका वो जो CCTV है उसके ऊपर वो जो इवेंट, जो मोस्ट रीसेंट इवेंट है उसकी फिल्म चल रही है. It's in the other room and then it's so somebody has a comment says almost every day. That simply means you're just repeating it to yourself too much. You're focusing on it too much. मैंने अपने पहले प्रोग्राम्स में कई बार जिक्र किया है, what you focus on, you will experience more of it. Okay, what you focus on is what will be reinforced. That will be repeated. So that means if you're experiencing it every day, that means you are focusing on it every day. Some people may experience it 20 times a day because they are focusing on it just that much. एक और चीज आपको बताऊं, sometimes people exaggerate things by saying, oh, I am always that way. You're not always anyway.
You're not always sad, you're not always depressed, you're not always happy. When you are sleeping, you're not depressed. Okay, you're not happy, you are sleeping. When you are laughing, you're not sad. So, okay. So when you see it on that CCTV, the movie on the CCTV, how does that look? अच्छा, फर्स्ट करो वो जो सिचुएशन है उसमें जो है ना उसकी जो शूटिंग हुई है, it's not from where you were seeing it from, but it was like from a camera जो कि वो उस सिचुएशन में वहां पीछे लगा हुआ था. Okay, and then like जो जो वो मूवी जो मेमोरी बनी आपके जहन में, वो मेमोरी उधर सीसीटीवी पे प्ले हो रही है. How is it? What do you see then? Is it any different? अच्छा, अगर फर्स्ट कीजिए कि उसी सिचुएशन में अगर कैमरा जो है मुख्तलिफ एंगल से उसको कैप्चर कर रहा होता उस सिचुएशन को, कैमरा इधर होता, कैमरा उधर होता, उस सिचुएशन को आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ एंगल से, would you be seeing different images telling a different story? Just check that. Would it be different for you? But remember, हम एक ही इवेंट के ऊपर अभी बात कर रहे हैं. It's like, okay. So is it different? अच्छा, फर्स्ट करो थोड़ी देर के लिए. लेट्स सपोज ये इवेंट आपके साथ नहीं हुआ है, ये इवेंट आपके किसी नेबर के साथ हुआ है. Okay, and you're just simply talking about it and telling another neighbor. Okay, let's suppose you have a neighbor, whatever their name is, उनके साथ इवेंट हुआ है, जो भी आपका इवेंट था, बट इट्स आपके साथ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ है. ओके, एंड देन देयर इज अनदर नेबर जिसको आप उसके साथ होने वाले इवेंट को अगर आप बयान करें, व्हाट विल यू से? एंड आई वांट यू टू स्पीक आउट लाउड. ओके, एक्सप्रेस इट एज इफ ये चीज उसके साथ हुई है और आप इस तीसरे शख्स को आप बता रहे हैं. यू आर जस्ट बीइंग अ विटनेस ऑफ इट्स लाइक ये हुआ है उनके साथ. व्हाट विल यू से? Say that. Is that a different experience? Is that a different experience? अगर फर्स्ट करो, फर्स्ट तो कुछ भी कर सकते हैं ना. ओके, सो ये इवेंट जो है जिसको आपने बताया था उसने आपसे सुना है.
और वो अब किसी तीसरे शख्स को बता रहा है जो उसने आपसे सुना उस इवेंट के बारे में जो उन साहब के साथ आपके इसने पड़ोसी के साथ हुआ। आपने उसको देखकर इसको बताया, अब ये जो है किसी और को बता रहा है कि इसको पता चला है कि उसके साथ क्या हुआ, तो ये जो है ये इसको कैसे बताएगा। सो लेट्स सपोज यू आर पर्सन ए एंड यू हैव दिस नेबर बी। इस बी के साथ कुछ इवेंट हुआ, कुछ सिचुएशन हुई, और ए ने सी को बताया कि बी के साथ ये हुआ। अब सी जो है वो पर्सन डी है, उसको बता रहा है कि मुझे पता चला कि बी के साथ ऐसा हुआ है। You get this? Okay. Now, what would person C say to person D while talking about that event? Can you take some time? It's okay. You don't have to rush through this, especially if you're watching recording of this. You can actually pause your recording here. Pause your recording and then go ahead and do it. So somebody has said, obviously, it will be different story with original event actually happened. Don't give me these answers. Don't talk about, what is based on your assumptions. Speak on the basis of your experiences. Okay. So tell me exactly, as you do this, how things change. Because, it's like if you try to intellectualize these things by coming up with logical explanations, you will not do yourself good. You want to benefit from this? Good. एक चीज बहुत बार लोगों को कहता हूँ, NLP is not something that you learn through watching things or through reading about it. It's like swimming. You learn by doing it. If you really want to understand NLP, the way to learn is doing it. So, do what I'm asking you to do and notice how it works for you. It may or may not, but just notice what's the difference you feel. So, intensity of pain. Again, intensity of pain will be different or will remain for a few seconds. It's like if you're talking about future, will this happen? Or it's like focus on what's happening right now. The more logical and mindful I will become, होगा अब तो interest खत्म, हो गया अब तो interest खत्म, just a story or a news rig told by a newscaster. Okay. Story completely changed now. Yeah, this is how it's supposed to be. It's a feeling like less negative. Okay. So repetition is the mother of skill. You've heard that from me many times, probably, if you have taken my previous sessions. Repetition is the mother of skills, because आपने जो पिछली story थी, आपने उसको इतनी बार explain किया, then you started believing on it. You change that story, you start describing it differently, you will start feeling different. Because you have a choice, by the way. And a choice is that you keep repeating the same story that you have been repeating and keep experiencing those feelings, those emotions that you've been experiencing and feeling. And maybe you're getting some unconscious benefits out of it, because हमारे जो emotions होते हैं, they actually, the reason that people hold those emotions is because they serve them in some way. I've worked with countless people in my, entire career so far. I've seen people like, so for example, so I remember I worked with not one, many people who have this anxiety issue. There was a woman who came to me and she had some anxiety issues. And, just like
when I talked to her and finding out the causes for it, what she came up was that when she is feeling anxious, she gets her husband's attention. So there was a benefit she was getting drawing out of being anxious. Okay. हम लोग को अक्सर अंदाजा नहीं होता, हम शौरी तौर पे नहीं कर रहे होते, हम शौरी तौर पे बुरा नहीं महसूस करना चाहते. ओके. हम लाशौरी तौर पे हमें कुछ उसके ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, हम उन बेनिफिट्स को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं. Sometimes people, it's like, for example, overweight, smoking, ऐसी चीजें हमें पता ही हमारे लिए बुरी है, हम नुकसान दे, मगर there is some benefit behind that, जिसे हम कहते हैं unconscious, the secondary gains. We have those secondary gains and we want to get those secondary gains, and to get those secondary gains, people tend to maintain their negative behaviors. And it doesn't really help. Sometimes people do those things so that they get attention from people. और ये जो अटेंशन वाली चीज है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग आज के हमारे जमाने में, प्रॉब्ली हम इतने ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं आपस में एक दूसरे से इन डिवाइसेस के, लाइक स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए. एक्चुअली आई वाज थिंकिंग इस डिवाइसेस जो है कुछ ओवर स्मार्ट हो गई है. ओके. सो हम इतने ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गए लोगों से. सो जस्ट टू get those benefits, sometimes people try to maintain. So if I ask you, by the way, if there was any benefit, आपके opinion में, आपके ख्याल में, if there was any benefit that anyone can get, not you, anyone can get, by holding on to that negative emotion, what benefit could that be? अगर किसी को कोई भी फायदा हो सकता उन नेगेटिव एहसासात को, डिप्रेशन, सैडनेस, फियर, एंजाइटी, व्हाटएवर नेम यू गिव इट, क्या फायदा हो सकता है किसी को? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? Zaib Malik has a question. What's the secondary gain of overeating? Oh, there are many. There are many. I work with women, Zaib, with overeating, like weight loss sessions, hypnosis, that's one of the most common things. I don't do them anymore, by the way. But I work with women, जिनसे मैंने पूछा like overeating or overweight होने का फायदा क्या है? You know what? I've heard these kind of statements. जब मैं दुबली थी तो मैं कहीं जाती थी तो लोग मर्द मुझे देखते थे और मुझे बड़ा अजीब फील होता था. जब से मैं मोटी हुई हूं ना, अब मुझे कोई नहीं देखता. I feel safe. That's a huge benefit. Think about this, especially हमारे माशरे में एक औरत को अपनी सिक्योरिटी जो है फील होती है. She feels safe going out. Nobody's looking at her. आप इसको गौर करो. So she has an event that she's going out and people are looking at her and she's interpreting it as not being safe. And as a result, she's, feeling insecure. And to feel secure, the solution she came up with, not consciously, unconsciously, is gain weight. Okay. So Ramiza says pain addiction. No. What's the benefit of pain addiction? Does that give someone more, help people get more attention? Does that give them this ability to say, हाँ मैं इसलिए नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, and then they get some excuses for not taking action? मैं अगर कोई शख्स एग्जाम में, इंटरव्यू में फेल हो गया, किसी जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया, तो उसके लिए ये कहना ज्यादा आसान है
कि मैं बहुत मेरे साथ एंजाइटी का इशू है, इस वजह से मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ या मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, उसके लिए ये एडमिट करना मुश्किल है कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी. So Tuba says it hits so hard. Tuba, जो deep conversations होती है ना, this is what they do because it breaks. That's how you experience, those transformations. That's how you experience, breakthroughs. It has to hit hard. Okay, I am not the kindest person in the sense of coaching people because I like to talk about those things because that's what they need. Okay, so some people, Khan Mohsin says attention, sympathy, relaxation could be anything. If there is a benefit, what could that be? And now here's another question I want you to consider. Okay. Now, what other positive ways can there be for anyone to have same benefits? और क्या तरीका हो सकता है? What are the other possible ways? बहुत साल पहले मेरे पास एक खातून आई and she was in her 60s at that time and she was a chain smoker and she used to smoke a lot and then she told me, she said कि जिस cigarette जो है, this is the only pleasure in my life because मेरे अपनी जिंदगी just like when I was young I lived for my parents and then I got married and I lived for my husband and then we had children और मैं अपने बच्चों के लिए जीती रही और मेरी सारी जिंदगी जो है वो दूसरों के ऊपर फोकस रही. अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा हस्बैंड भी है बट मेरी जिंदगी में और कोई प्लेजर नहीं है. द ओनली प्लेजर आई हैव इज सिगरेट. And she wanted to help me her quit smoking. And I told her I don't want you to quit because that was the only benefit for her. So I told her, I said, okay, what I want you to do is I want you to go and find out some other activity that gives you same kind of pleasure. And after like maybe 4 or 5 days, she called me and she told me that she's found some activities. And she told me it's like plants. उसको उनका शौक था बहुत ज्यादा तो उन्होंने अपने घर में she used to live in some flat I think. So she didn't have a lawn but वो plants का शौक था. Then she came up with this idea कि घर में उन्होंने छोटे छोटे पौधे ला के रखे और वो उसके ऊपर उन्होंने घर में छोटी सी क्यारी अपने फ्लैट में बना ली. Okay, great, fantastic. Okay, so she came up with a way to find a solution to another way of coming up with those benefits. So that's what my question is कि अगर whatever those benefits may be आपके ख्याल में, how else can you get those benefits? What are the ways that you can get those benefits? So I'm seeing some responses. There's a question said 2 hours के लिए recording दे दें. आप lifetime access के लिए recording मेरी website से purchase कर सकते हैं. I'll share the link. I think अगर आप मेरे WhatsApp किसी भी group में हैं तो आपको link मिला होगा. Buy it. Okay. So just think about that. Think about those ways, and once you have that, you got some ideas.